Now we are on question number 3. So question number 3 of creative critical reflection is, how did your production skills develop throughout this project? So अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखें, इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन. सो द थिंग इज, प्रोडक्शन स्किल की डेवलपमेंट आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई? सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द प्री प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन एंड देन टू द पोस्ट प्रोडक्शन. सो इट्स द कंप्लीट जर्नी you are going to talk about. So this is the part where you can share your research and planning. And research also is just one word, but the thing is, in research you can discuss your all the research you did on internet, and you can talk about YouTube, and you can what you will be doing basically is कि आप अपना जो आपका वो है जो आपकी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, अब वहाँ से, क्योंकि आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या करेंगे कि आप उनको अपना YouTube की जो आपकी इंस्पिरेशंस आपने फॉर एग्जांपल, या फिर आपकी वो फिल्म ओपनिंग जहाँ से आपने इंस्पिरेशंस लिए, आप उनको प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब वहाँ से आप अपना रिसर्च दिखाएं, आप उनको बताएं कि कैसे आप लोगों ने रिसर्च की, कौन सी आपकी इंस्पिरेशंस थी, एंड हाउ यू गॉट इंस्पिरेशन फॉर द टाइटल्स, हाउ you got inspirations for opening your narrative, for establishing the characters. और आप इस तरह से करके क्या करेंगे कि आप उनको प्रैक्टिकली बताएंगे कि आप लोगों ने कैसे कैसे रिसर्च की, रिसर्च into the real media, research into others work, and research into the titles. So and your research should include the genres reference. So this point is very important. एक छोटा सा नुक्ता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द थिंग इज कि आप जिस जॉनरा की आप फिल्म ओपनिंग बना रहे हो, उस जॉनरा के अपने कन्वेंशंस हैं. सो टॉक अबाउट, डोंट जस्ट गो फॉर लाइक ओके यूजुअली फिल्म्स ऐसे ओपन होती हैं. इंस्टेड यू शुड गो फॉर कि इस जॉनरा की फिल्म की ओपनिंग इस तरह की होती है, एंड देन यू कैन शो देम द इंस्पिरेशन और सम रियल मीडिया टेक्स्ट फॉर द इंटरटेक्सुअल रेफरेंस. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम रिसर्च. Also tell them about planning, how you went for planning. At planning you can talk about storyboard, you can talk about the script, you can talk about your all sort of like paperwork, whatever you did, like the brainstorming sessions or the mind mapping, and as well as you can show them your animatic and all the phases of planning. Also you can talk about your location scouting, you can talk about your कास्टिंग, आपके कास्टिंग के इंटरव्यूज़ अगर आप लोगों ने कुछ किए. देयर इज़ वन थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कई दफ़ा ऐसा करते हैं कि दे सिंपली से कि ओके वी चोज दिस एक्टर बिकॉज ही और शी वाज द ओनली वन अवेलेबल. सो डोंट गो फॉर दिस थिंग. इंस्टेड व्हाट यू शुड डू इज यू शुड गो फॉर समवन who has the talent to perform, because the only one available might not have the talent जो आप लोगों को required है. Okay, so on doing that on a student budget itself is a very crucial part of the planning. So research and planning, after showing them the research planning, then show them how you went for the practical shooting. So you can talk about the camera, you can talk about your choice of tripod, you can talk about your all the production whatever you did over there, how was your experience, how your skills developed basically. So your skills of handling the camera, your skills of direction, your skills of communicating with the artist, your skills of doing the composition, and all those things आप अपने प्रोडक्शन के क्या करेंगे कि प्रैक्टिकली इस वक्त प्रोड्यूस करते हुए आपकी लाइटिंग का, साउंड का, कैमरा वर्क, प्रैक्टिकली आप लोगों ने जो जो काम किया, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, लाइक हाउ योर production skills develop. And after the production you are going to talk about post production. So production word के अंदर आपका pre-production, production and post production all is included. For the post production you should talk about all the editing decisions. So all the non-diegetic sounds you used, all the Foley sounds you used, diegetic sounds, and you can also talk about the dialogues. You can also talk about your editing, and maybe your pace of editing, fast paced or slow pace, or maybe cutaways or cut-ins, insertions, and all those editing decisions, whatever decisions you took during the editing. And then how you exported it into what format. So complete up till
द फाइल विच यू हैव प्रोड्यूस्ड, फाइनल जो आपके पास फाइल आ गई, तो तब तक का आपका जितना प्रोसेस है वो सारा का सारा आपकी प्रोडक्शन स्किल्स की डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है. सो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वास्ट क्वेश्चन एंड यू कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग इन इट. आई होप सो द थिंग्स आर क्लियर एंड यू आर गोइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताई है.